You didn't fly with him, right? Just did something similar today for similar reasons, but the CIFSF guy came in with so many questions. अब मैं बस I can feel कि मेरे आंसू निकलने वाले हैं. So यार अब मैं अपने work life gossip कहाँ ले जाऊँ? मैं बहुत serious हो गई थी for 2 days that you know what, I'll get a nose surgery done. Like, have you ever gotten frustrated when you know other influencer is lying on a video about something? Only when it comes to your own money, things change like 180 degree. Hi everyone, welcome back to the channel. I think a lot of people like my Q&As and मैं उतना ही कम करती हूँ उन्हें on YouTube. I don't know, I feel मेरी Q&A वाली vibe सिर्फ Instagram पे आ सकती है. तो I've been pushing and forcing myself कि अब हर दूसरे महीने I have to do a Q&A on YouTube as well to just stay in touch and be this थोड़ा chill back वाला vibe. Also, I'm on my chumps. It's my second day. So I'm a little मुझे समझ नहीं आ रहा मैं बैठूँ कैसे, तो मैं थोड़े से पीछे लेट के सवाल के जवाब दूंगी. Just don't mind me. And that is my favorite candle. मुझे अभी आज रियलाइज हुआ कि वो आधी से भी कम हो गई है. मैंने एक्चुअली 2 बार ऐसे Q&A वाली स्टोरी डाली है, तो I have a lot of questions from there. I have questions from YouTube as well. A lot of them were repetitive. So मैं अपना पिछले Q&As भी नीचे लिंक कर दूंगी. We're gonna talk about some different topics today. So yeah. सबसे पहला question is you never reply, so no questions. Guys, it's impossible to take all these questions, right? So इसलिए I really hope you give me a question next time. Okay, a lot of questions were about how much I am making right now as an influencer and is it a stable job. Guys, मैं 2 साल से अपने आप को sustain कर रही हूँ through the money that I make from this industry. Don't take it as a bragging sort of a thing. I do have lesser things to invest in as of now. आगे मेरा खर्चा बढ़ेगा but अभी नहीं, because I don't even have to like pay out rent as of now because I'm living in this house. तो इसलिए savings भी काफ़ी अच्छी हो जाती हैं. Like I've been doing things which were unimaginable to me 2 years ago. So yeah, it's really stable. You get really good money, but only after reaching a certain point. One materialistic thing which you dreamed to buy in coming future. You know, एक time था मेरी life में जब मैं बहुत बच्ची सी थी यार. I remember मैं गाजियाबाद में थी, तो I must have been in 6th or 7th class. I remember मुझे एक नया luxury brand मिल गया था, which was LV. मैंने किसी मूवी में देख लिया होगा कि the girl is buying LV and stuff. तो मैंने तब से प्लान बना लिया था कि जब भी मैं कमाने लग जाऊंगी, चाहे वो मेरी first salary से आए या फिर मेरी first savings से आए, I will get myself a LV bag. And I had this in my mind for a really long time as well. I remember मैं 11th 12th में दोबारा आयशा देख रही थी बीच में, तब भी मुझे लगा कि हाँ यार, आयशा मूवी में भी they carry a lot of luxury brands. And cut to my real job. When I was finally able to save a large sum or like a good sum of money finally, मैंने उस sum of money से I took my first and only international trip to Bali. I don't know, उस trip के बाद मुझे लगा कि I mean I can save this much money and make memories for life with that money by traveling. Your idea and your goals are very different about money. जब आप अपने पापा या मम्मा का पैसा उड़ा रहे होते हो and finally when it comes to your own money, things change like 180 degree. मेरी उस ट्रिप के बाद मुझे realize हुआ that I was very very sure about this, that I'm not going to be somebody who's into luxury brands at all. I come from a very middle class family and मेरे पास अगर चाहे जितना भी पैसा हो जाए, I think the most I'll spend on will always be travel या फिर gadgets. Yeah. Like इस बार भी हमारी पौंडीचेरी ट्रिप की टिकट्स लिटरली हमने 3 दिन पहले कराई थी. I paid a bomb on that. लखनऊ टू चेन्नई की टिकट्स were expensive as hell. So yeah, मेरे लिए materialistic कुछ नहीं होने वाला है कभी भी. It's always going to be on experiences and other stuff. Isn't swimming damaging your skin? I'm scared about acne, इसलिए नहीं जा रही हूँ swimming. And there were other questions about acne as well and skin in general. I think by now everybody knows my struggle with acne and the spots. I never had acne as a teenager. It was only in my 20s, mid-20s के around when my PCOD started flaring up. And this experience in my 20s and in the recent years made me research even more about actives and ingredients that are effective on acne and the scarring. And so far it has been working out really well for me. I think I've mentioned about this one active ingredient which is also a BHA, that too an oil soluble one, which is called salicylic acid. This is the latest addition to my skincare thanks to St Ives, a very loved brand from USA which is finally available in India. And before you pronounce it wrong, it's not
St Ives or Stevie's or St Ives. It's just called St Ives. I've been using their Pimple Clear Face Wash, which has 2% salicylic acid along with tea tree. Both of them are superb for your active acne as well as your old acne scarring. Salicylic actually works on unclogging your pores from the impurities and the oil, and also works on blackheads and whiteheads. My skin, touchwood, has been really good ever since I've included this in my skincare. It deeply cleanses to leave your skin clear and fresh, shows results on scars, removes 99.99% of pimple-causing germs to help pimples at bay. The product feels so gentle on your skin, suitable for all skin types. And this is such an easy way to incorporate ingredients and actives in your skincare routine to keep your skin fresh and clear of pimples. It's 87% naturally derived, it's dermatologically tested, non-comedogenic. In fact, it clears your pores. Soap-free, paraben-free, and alcohol-free. After that comes the face scrub that I use like twice a week to give my skin an even toned smoothness due to the amazing walnut extract, along with, of course, my favorite skincare ingredients, which are salicylic acid and 100% natural tea tree extracts. It works well on all skin types and also keeps your skin away from dullness. मैंने पहले भी बोला था कि I feel really bad that a lot of girls are scared about their skin, इसलिए वो ज़्यादा enjoy नहीं करते, धूप में नहीं जाते या फिर swimming जैसी चीज़ें नहीं करते. Guys, just incorporate good ingredients in your skincare and trust me, your skin will remain nice. And these two products are gonna really help you in that. Plus, these are super affordable as well. The face wash is just at 360 rupees and the scrub is just for 225 rupees. दोनों की link मैं description में दे दूँगी. So yeah. Okay, next one is really interesting. Hey, I saw your met my boyfriend after 3 years video. Just a question, did you do security check-in as well? Because you didn't fly with him, right? Just did something similar today for similar reasons. But the CIFSF guy came in with so many questions. Okay, I am so sorry if you got into a little bit of trouble. Yes, मैंने security check-in किया था. उसके बाद हम एक lounge में बैठे हुए थे for like 1.5 hours. And मैं finally उसे boarding gates तक छोड़ के आई, and that's when I informed the air hostess who was sitting there and checking the passes and I won't be boarding the flight. I couldn't even hug him because बड़ा awkward सा हो रहा था, तो he just left. I just said bye. I was like ठीक है, एक दिन बाद मिलेंगे. वाला चीज़ मुझे कोविड हो गया था उसके बाद. But yeah, उसके बाद I think what worked for me was मेरे साथ एक और बंदा था जिसका luggage खो गया था. So he was creating a scene there, not a scene like he was genuinely worried and he was screaming that nobody is helping him. तो मेरे से टेंशन उन पे डाइवर्ट हो गई थी. एंड वहाँ पे एक और फ्लाइट थी जो कलेक्टिवली काफ़ी लेट हो गई. एक्चुअली इतना chaotic था दिल्ली का एयरपोर्ट उस दिन that nobody cared. Nobody even asked me. I think एक दो बार पूछा था किसी ने and I just said कि I have some personal reasons and honestly मेरी शक्ल से पता चल रहा था that I've cried a lot. So yeah, I'm sorry if you got into trouble. Guys, ये मत करो. मतलब मैं तो हूँ थोड़ी सी impulsive. What are your plans for your hair color thing which you told you wanted to do? I just want to say मैंने 2 दिन बाद की appointment book करा ली है. So hopefully whenever you see me next, you're gonna see a very completely different hair with this face. I have no clue मैं क्या करने वाली हूँ. Do you get your periods every month with PCOD? Honestly, मुझे बहुत महीनों से periods नहीं हो रहे थे because I was very careless with my weight gain, my diet, everything. I was struggling with everything and honestly having a lot of fun because कोई हार्मोनल लोचा नहीं होता था, अलग चीज़ें होती थी मेरे साथ PCOD में. But I was so happy. अभी मुझे literally my cycle has gone back to normal. So yeah, now I'm getting periods. In fact, period से 8 दिन पहले मुझे period cramps भी आ रहे हैं. Your fears. I think loneliness. मुझे हमेशा लगता था कि I'm very like independent and strong and self-dependent, very self-sufficient in a way, but eventually I've realized this year that I do fear being lonely a lot. I'm not lonely. I have people. I'm working on it. A lot of how are you so confident about your body weight in spite of the gain. My last video is like all about that, so you can watch it. Do you sometimes think of anything you would like to change about yourself, weight, nose, body? So I think body shaming तो हमारी बचपन से ही होती रहती है if you come from a middle class family. मुझे बहुत पतला तो बोला ही जाता था. उसके अलावा मुझे दांतों के लिए बहुत बोला गया है, which I still get from my YouTube comments कि oh you should get braces.
नो बिच, थैंक यू सो मच। अपने बच्चों के कराना, मेरा दिमाग मत खाओ। देयर वॉज अ टाइम लाइक फ्यू मंथ्स अगो, देखो मेरा भाई ना बायो स्टूडेंट है तो उसको काफ़ी कुछ पता रहता है। हमने पता नहीं कहाँ क्या पढ़ लिया अबाउट नोज सर्जरीज एंड आई जस्ट एवरी आस्क कि वो नोज सर्जरी होती कितने की होगी एंड इट वॉज समथिंग दैट आई कुड इजीली अफोर्ड। मैं बहुत सीरियस हो गई थी फॉर 2 days दैट यू नो व्हाट, आई गेट अ नोज सर्जरी डन, लाइक मैंने उसको शेप करवा लूँगी। एंड इवन तो आई एम वेरी वेरी नॉर्मल विद माई नोज, ऐसा कोई मेरे को इशू नहीं है, इनसिक्योरिटी नहीं है, बट आई डोंट नो व्हाई आई फेल्ट इन दैट मोमेंट कि नहीं इसको और सही करा लेते हैं। एंड आई डिस्कस्ड इट विद माई बॉयफ्रेंड एज वेल, आई वाज दैट सीरियस। एंड उसने सिर्फ एक बात बोली कि यशिता इफ यू वांट टू गेट इट फिक्स, मतलब कहीं ना कहीं आई थिंक देयर इज अ पार्ट ऑफ यू हु स्टिल फील्स कि इट्स नॉट परफेक्ट। एंड या उस टाइम पे मुझे अपनी हिपोक्रेसी समझ में आ रही थोड़ी सी, एंड आई डिडंट थिंक अबाउट इट उसके बाद से कभी भी। आई लव माई सेल्फ जैसी भी हूँ मैं, जितना भी मुझे भगवान ने दिया इट्स ऑल नेचुरल। इनफैक्ट ब्रेसेस लगाए थे बचपन में, उसका भी कोई असर नहीं हुआ है। एक्चुअली आई वॉन्ट टू करेक्ट दिस, पीपल हु स्क्रीम एट मी ना कि ब्रेसेस लगवा लो, माई टीथ आर कम्प्लीटली फाइन, वो अलाइनमेंट सही है, इट्स माई मसूड़ा, लाइक वो जो जो है ना अपर जॉ मेरा वो ही बाहर है, लोअर जॉ अंदर है। सो उसकी वजह से हर चलते फिरते इंसान को लगता है कि इसको तो ब्रेसेस लगाने होते हैं, नहीं। डेंटिस्ट के बाद ना बचपन से जा रही हूँ, अपना ज्ञान अपने पास रखो। एंड कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, आई थिंक द ओनली थिंग आई एवर चेंज अबाउट माई सेल्फ इज माई ब्रेस्ट। यार हेवी ब्रेस्ट पीपल गेट इनटू अ लॉट ऑफ फिजिकल पेन, मेरी बैक ये इतना पेन करती है कभी कभी। द ओनली थिंग आई एवर गो फॉर इज मे बी ब्रेस्ट रिडक्शन, बट वो भी मैं ऐसे ही बोल रही हूँ बिकॉज वो मुझे जस्टिफाइबल लगता है। मे बी व्हेन आई एम ओल्डर थिंग्स माइट चेंज, माइट गेट सम फिलर्स और बोटॉक्स, आई डोंट नो, एंड आई विल रिकॉर्ड इट फॉर यू गाइज, बट अभी के लिए दैट इज इट, लाइक ब्रेस्ट रिडक्शन इज द ओनली थिंग दैट आई माइट डू, बट दैट इज नॉट फॉर श्योर। What is crossing a line for you in a relationship? Have you set boundaries in your relationship? What is completely not acceptable? I think anything he's doing, I think cheating is not acceptable, like not at all. मुझे बहुत issues है with trust and stuff. तो if I get to know that he lied to me or he or she lied to me, मैं अपने सारे relationships की बात कर रही हूँ, then it will take me years or maybe just कोई भी amount of time will never be enough to trust that person again. वैसे तो मैं all in all बहुत ही सीधी सादी नाइव सी बच्ची हूँ, मैं किसी को भी ट्रस्ट करती हूँ। लाइक ट्रस्ट की बात नहीं, if somebody is telling me something, मेरे दिमाग में बाय डिफॉल्ट मैं उसे ट्रस्ट ही करती हूँ। लाइक व्हाई वुड पीपल लाई टू मी, मेरे दिमाग में ये कहता है कि झूठ क्यों बोलेंगे लोग, बट ऐसा नहीं होता है। सो या इफ आई गेट टू नो दैट यू आर लाइंग टू मी, इट विल लाइक रियली हैम्पर द रिलेशनशिप। Have you ever gotten frustrated when you know other influencer is lying on a video about something you know? So it's never been मेरे को क्यों frustration होगा यार, मेरे को क्यों frustration होगा। So initially जब मुझे चीज़ें समझ में आने लगती हैं, like there were things I will not name, but कुछ चीज़ें हैं जो बड़े आराम से एकदम प्यार से मैनिपुलेट कर ली जाती हैं by some influencers, not some influencers but certain situations में, especially जब एक common campaign था, I was seeing कि कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने अपना अपलोड टाइम मैनिपुलेट कर दिया है, मतलब पूरा कि ओ आई एम सिक एंड इसलिए वो लेट होगा, जबकि वो ब्रांड की रिक्वायरमेंट है कि वो उस दिन 8 बजे ही रिलीज़ होना है। हम सबको लाइन से वो 8 बजे ही रिलीज़ करना है, तो वेदर यू आर सिक और नॉट, इट हैज़ टू गो ऑन दैट टाइम ओनली। तो वो मैंने काफ़ी लोगों के व्लॉग्स में देखा था, वीडियोस में देखा था, एंड आई हैड अ गुड लाफ। आई वाज लाइक ओके वाओ, पीपल लाई सो आराम से। आई जस्ट लर्न एंड पिक अप थिंग्स, ऐसे यू नो स्किल्स आने चाहिए इफ यू आर बीइंग इन्फ्लुएंसर, इफ यू कॉल योरसेल्फ एन इन्फ्लुएंसर। तो आई डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड, आई जस्ट हैव अ गुड लाफ। आई जस्ट डिस्कस इट विद माई फ्रेंड्स हु आर नॉट इन्फ्लुएंसर्स, बड़े मजे में उसके साथ गॉसिप करती हूँ, बिकॉज यार अब मैं अपने वर्क लाइफ गॉसिप कहाँ ले जाऊँ। तो या इफ़ आई फील लाइक कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें यार चलती हैं काम में, इट्स ओके। कुछ चीज़ें हैं विच ट्रिगर मी अ लॉट, सो दैट आई इवन कॉल आउट इन माई स्टोरीज कि जिसको समझना है समझे, उसको नहीं समझना है समझ ना समझे। आई डोंट टैग पीपल, बट या आई हैव माई वे ऑफ रिलीजिंग द स्ट्रेस एज वेल। While in college, how did you and हर्षित भैया मैनेज योर करियर, एंड आपको डर नहीं लगा कि भैया इतना अनएम्प्लॉयड होंगे? आई एम श्योर उस टाइम पे सिर्फ मुझे अपने एम्प्लॉयमेंट की चिंता थी, वो तो मैनेज कर लेता है, इज रियली गुड इन द स्ट्रीम। ट्रस्ट मी, जब वो इन्फोसिस से निकल रहा था, लाइक माई एंटायर बैच वॉज देयर टू सी हिम ऑफ, एवरीबडी वाज सेइंग कि यार कुछ भी हो जाता है, किसी को भी निकाल देते, हर्षित इज सो फ्रिकिंग गुड, उसको क्यों निकाल रहे, बट कहीं ना कहीं डीप डाउन एवरीबडी न्यू दैट ही मैनेज थिंग्स
बहुत ही स्मूथली। नहीं, मुझे कभी नहीं लगा कि वो अनएम्प्लॉयड होगा। क्या नहीं, कैसा क्वेश्चन है, oh my god. Have you ever been jealous of any female friends of Harshad Bhaiya? Not at all. Not at all. I feel the only time I felt jealous, actually not jealous, I was insecure because of my social anxiety. मैं बता रही हूँ, वो 1.5 साल जो मेरा कॉलेज का था, मैं उसी टाइम पे सबसे ज़्यादा इनसिक्योर रही हूँ अपने हर एक रिलेशनशिप में. नॉट जस्ट माई लव रिलेशनशिप, ऑल्सो माई बेस्ट फ्रेंड वाला रिलेशनशिप, पूरा सर्कल. आई फेल लाइक ये लोग मुझे छोड़ देंगे, ये तो मुझे छोड़ ही देगा. आई वॉज एट द लोएस्ट ऑफ माई सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ इस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट. मेरे लिए मैं सबसे नीचे आती थी पूरे ब्रह्मांड में. उससे पहले भी मैं कभी इनसिक्योर नहीं थी, उसके बाद भी मैं कभी इनसिक्योर नहीं हुई. उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, उसमें सिर्फ मेरी. I was going through a phase and yeah, that's it. What did you mean by last Rakhi in your recent vlog? Please tell no. So, yeah, मुझे इसके बारे में बात करने का बिल्कुल मन नहीं करता because I don't like it, but it was our last Rakhi because my brother is finally leaving me. Like, he's leaving Lucknow for his college. He's going for his graduation and he's literally leaving in a few days, and I'm such a mess. I'm gonna miss him so much. So I can feel कि मेरे आंसू निकलने वाले हैं. So I will control. Yeah. So yeah, that was this is the reason why it was our last Rakhi, and वो बहुत दूर जा रहा है तो इसीलिए. But I'm really happy for him. I'm so happy for his new phase. I know 2 साल से बहुत परेशान था. So yeah. I am so frustrated with my parents. Feels like running from home. No freedom. Very narrowed mentality. Hi babe. I think इस टाइम पे a large chunk of my audience might be relating to this point. सबके पेरेंट्स उतने इवॉल्व नहीं कर पाते यार, होता है. I think one of my major reasons, one of the few reasons for me to move out was also that I felt very बंधा हुआ उस घर में. So बंधा हुआ से ज़्यादा I didn't have my own space वहाँ पे actually. So I know running away from home is not a possibility, but you can find reasons to just move out from home. I don't know आप कॉलेज में हो या फिर ऑफिस में हो. अगर ऑफिस में हो तो I know a lot of people have been lying to their parents and just moving out from their hometowns and sitting in different cities and working from home from there, and it's working out for them. So अगर आपको लग रहा है आप घर पे नहीं रह सकते, you can go for that. It is completely and absolutely necessary to prioritize yourself. यार मैं सच बता रही हूँ, I know as kids you do feel guilty about doing something for your own self, leaving your parents. But if your parents are healthy and able to take care, हट जाओ उस रूम से, हट जाओ उस घर से. नहीं तो start stepping out of your home जब भी टाइम मिले. Talk to your friends about it. I feel मेरे लिए what worked was talking to a friend जिसकी family situation थोड़ी similar थी. Not similar but she would understand these things. So उससे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता था. So yeah, these are some ways you can deal with these things. If it can help, I would also suggest going for therapy. Like, therapy is really going to make things clearer for you. What's your strength? I don't know. अभी तो I seriously don't know. Oh, okay. मुझे 2-3 questions आए. What do you like the most about SRK? Oh my god, my ovaries will explode. Okay, so I really don't know how to answer this question because पता नहीं, I can't find one reason, but I can tell you, जब से मुझे like याद है जो मैंने पहली स्टार्टिंग की स्टोरीज या मूवीज देखी होंगी, इट वॉज ऑलवेज शाहरुख खान्स मूवीज. एंड उसमें भी ही यूज्ड टू प्ले दिस गूफी क्यूट सा लवेबल केयरिंग सा बंदा. तो आई हैव दिस एंटायर स्टैंडर्ड सेट कि शाहरुख खान जैसा ही बंदा चाहिए था. वो मेरा प्यार होता था. आई सॉ गौरी खान विद हिम ऑन सम इवेंट. कोई तो फिल्म फेयर या कोई आईफा शो होगा, एंड मैंने पूछा ये कौन है, तो सबने बताया कि वो उसकी वाइफ है. तब तो मुझे पता चला 3rd-4th क्लास में कि वो उसकी वाइफ है, एंड आई वोंट बी एबल टू मैरी हिम. वर ऑल किड्स यार, बचपन में क्या ही पता होता है सबको. एंड जैसे जैसे मैं बढ़ती गई एंड आई वेंट थ्रू माई डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ, चाहे वो early teens हो, late teens हो, early 20s हो, I feel like Shah Rukh Khan has always been relevant, and he always had something in him जिससे मैं inspire हो पाऊँ. I don't know, that man is just so good. He's so witty, he's so inspirational, he's really good. अभी भी मैं उसे देखती हूँ तो he took a long sabbatical from his work
and just to reflect back on उन्होंने क्या गलती करी, and that is also something really inspiring, something really great. I think जब उनके interviews काफ़ी famous होने लग गए थे, in one interview he mentioned that he doesn't sleep because he really enjoys his work, and उस time पे I was struggling with my full-time job and my YouTube, and I really literally उस time पे मैं नींद से परेशान थी, and I heard him say कि oh he only sleeps for 4 hours. एंड मैंने वो करना स्टार्ट कर दिया एंड इट वर्क वेल फॉर मी. तो मैं भी बहुत कम सोने लग गई थी उस टाइम पे, जस्ट बिकॉज आई हर्ड हिम सेइंग दैट, एंड मुझे बस मोटिवेशन मिल गई वहाँ से. तो मैंने आई थिंक आंसर तो बिल्कुल नहीं किया, बट आई रियली लाइक हिम, आई स्टिल लव हिम, एंड आई जस्ट लव हिम, एंड आई ऑलवेज लव हिम. Yeah. Question, apart from cliche advices for new creators, just do it, be consistent. What is something that you would really advise them? And also, how do you keep your patience initially? There aren't numbers and you don't know even what to do, what new to do, your motivation is running out. Abhi ke creators ke I would highly recommend following the patterns that are really working for other people. I would say study the people जिनकी growth आपको बहुत impress कर रही है, जिनका content आपको बहुत अच्छा लग रहा है. Take inspiration from that and just make it your own. जैसे मैं example लेती हूँ, Sara Surosh is growing at a phenomenal speed. I'm so happy for her, and I've seen she was the only, or maybe she was one of those initial creators जिसने YouTube Shorts का बहुत अच्छा फ़ायदा उठाया है, and it has worked fantastically for her. उसके बाद I saw a lot of OG creators also started doing it because they could see the growth. So really work on the shorts and make them really good. अपना 100% 200% दो उस चीज़ को, because short form really gets you the numbers and reach. Also make a content just in a way कि जिससे लोग आपकी प्रोफाइल पे बार बार आए. I'm seeing a pattern like 7 days of Meesho finds, 7 days of college finds. आप ये कर सकते हो शॉर्ट फॉर्मेट में. एक चीज़ मैं और रेकमेंड करूँगी, हॉल वीडियोज़ पे ना बहुत व्यूज़ आते हैं, बहुत जल्दी ऑडियंस आती है, बट यू हैव टू मेक श्योर कि वो ऑडियंस इज़ नॉट जस्ट देयर टू सी योर क्लोथ्स. There has to be a personal connect as well from the audience, ताकि वो आपके vlogs देखे, ताकि वो आपसे personally relate कर पाए. My question is, when you decided to live separate from your parents, you didn't feel sad leaving them alone, you didn't feel like they need you or you need to be with them as the support, or do you visit your parents' nest every day? I think luckily my parents are very healthy and very capable of living on their own, and they don't need it. I feel मेरी family के लिए सबसे अच्छा यही हुआ है कि हम अलग हो गए, हमारे घर में शांति थी, and it has really worked well for my mental peace. So yeah, of course अगर मेरे parents और जैसे they'll age, I'll be there with them. I haven't left them. Why do you feel like कि moving out का मतलब सीधे छोड़ देना होता है पेरेंट्स को? I moved out when I was 17 and that was for college. तो मैं तब से उनसे अलग रह रही हूँ, dude. I think this kind of guilt comes in जब आप बहुत टाइम से अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हो, and या फिर मे भी कभी बातों में पेरेंट्स भी आपके अंदर वो बोल के गिल्ट डालने लग रहे हैं कि तुम चले जाओगे तो मैं क्या करूँगा, ऐसी चीज़ें कि अच्छा मुझे ऐसे छोड़ दोगे वगैरह वगैरह. आई डोंट नो, मैं इस पर ना, मुझे आई थिंक पेरेंट्स वाले टॉपिक पे किसी पे भी एडवाइस नहीं देना चाहिए, क्योंकि मेरी सिचुएशन बहुत ही अलग है. यू कैन लव पीपल एंड यू कैन टेक केयर ऑफ पीपल फ्रॉम बीइंग इन डिफरेंट हाउसेज एज वेल. अगर उनको कभी भी कोई ज़रूरत पड़ेगी, मैं 10 मिनट की दूरी पर रहती हूँ, आई विल बी देयर एंड आई हैव बीन देयर. तो नो, आई नेवर फेल्ट द सैड थिंग, कुछ भी नहीं है ऐसा. How do you stay consistent even though you see other creators are achieving more numbers as compared to yours? मेरी पर्सनल लाइफ इतनी chaotic है, इतनी messed up है ना, honestly, numbers don't matter to me. I am just very very grateful to be getting work. I'm very grateful that this is how I earn money and I'm earning well, touch wood. इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकती. I am just going through a lot. And yeah, I'm going to be very honest, इस साल मेरी professional life has been at the back end. Like really it has taken the second seat, passenger seat. Driving force has been just me and my personal life, जिसके साथ मैं अभी भी डील कर रही हूँ. Not very nicely, but yeah. So इससे आपको पता चलेगा मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है, because बहुत कुछ चल रहा है पीछे. How to break free from fear and anxiety to try new things and getting out of comfort zone. I think I'll end with anxiety वाला ही topic. See, anxiety is basically emotions and just your fears जिसको आप address नहीं कर रहे हो, तो वो बार बार ना ऐसे आपको jerks दे रहे हैं, आपको थोड़ा physical form में feel हो रहे हैं and psychologically feel हो रहे हैं, and ये मेरा तरीका है. It will not work for you, I know, and
सुनने में तो और भी ज़्यादा अजीब लगेगा, बट इफ़ आई एम गेटिंग एंशियस अबाउट समथिंग आई ओवर थिंक अबाउट इट, आई ओवर एनालाइज इट एक्चुअली, बिकॉज एंजाइटी कम्स इन द फॉर्म ऑफ अ वेव. अगर आप एक पॉइंट पे सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाओगे ना, आई नो दैट, एंड उसके बाद इट फेड्स अवे. ये मैं कॉलेज टाइम से कर रही हूँ, दैट वाज द टाइम आई हैड लाइक मेजर एंजाइटी. अब तो एंशियसनेस आती है, थोड़ी रिसेंट में एंजाइटी आई है. और जितना आप अपनी एंजाइटी से भागोगे ना, जितना यू वुड वांट टू रन अवे फ्रॉम दैट फीलिंग ऑफ रेस्टलेसनेस, उतना इट विल कम एंड हॉन्ट यू अगेन एंड अगेन. यू जस्ट हैव टू सिट विद इट, यू हैव टू एड्रेस इट. इन योर केस यू आर मूविंग आउट, तो चेंज एंजाइटी इज़ वेरी वेरी नॉर्मल एज वेल. Getting restless about कि क्या होगा, about your future, about certain uncertainties is very very normal. Maybe sit and think about very specific points कि आपको move out करने में या certain changes में क्या issues दे रहे हैं, because the answers are most of the times in our head. It's just हम उस restlessness में इतना lost हो जाते हैं कि we never sit and think about the main points. जैसे if I have to move out, okay, I'll share this part. जैसे अभी मुझे बहुत एंजाइटी होती है थिंकिंग कि हाउ विल आई मैनेज दिस एंटायर हाउस ऑन माई ओन, एंड दैट आई मिस माई ब्रदर इज अ लॉट, एंड आई वाज स्टक एट दिस कि मैं उसके बगैर कैसे रहूँगी. इवेंचुअली मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई थिंक मिसिंग समबडी इज़ नॉट अ बैड थिंग. आई कैन मिस हिम, एंड आई नो कि मैं अकेले पहले भी रह चुकी हूँ यार. अकेले रहना वुडंट बी एन इशू विद मी. अब मैं अपने एंशियसनेस को संभालने के लिए अपने भाई को वापस रोक तो नहीं सकती. सो समटाइम्स जस्ट सिटिंग एंड थिंकिंग अबाउट दीज थिंग्स हेल्प मी. आई नो अ लॉट ऑफ पीपल आर वेरी स्कैर्ड अबाउट स्टार्टिंग थेरेपी, बट ट्रस्ट मी, इट विल रियली रियली हेल्प यू एंड गिव यू clarity about your own thoughts and your own patterns. But sit and think about the particular points that are like really causing that restlessness. And I think that is all for this video. I tried answering as many questions as I could, but अगर आपके questions रह गए हैं, trust me, सबसे बड़ा रीज़न होगा कि मैं उसको पहले वाले Q&A में आंसर कर चुकी हूँ. तो प्लीज़ वो देख लो अगर आपको सच में वो क्वेश्चन का आंसर चाहिए. एंड दैट इज़ ऑल. आई रियली होप यू एंजॉय दिस वन, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय.